Good morning, team. Gokuldas Export has said the company has commenced its commercial production after obtaining license and clearances from relevant authorities on achievement of full ramp up and productivity, and the unit is likely to contribute about 5% from the current capabilities. So, no, this is very positive for Gokuldas Export. And I was reading an article where Indian textile export has started to improve. So that means most of the textile companies will start to benefit, and this could be because of China +1 policy also. So Arvind also in their con call mentioned that synthetic textile is doing very good for them, and the margins in synthetic textile is far higher. So Arvind, KPR Mill, Gokuldas Exports are few stocks we like in textile space. AIA Engineering, I think they have done very well. Now they are in a business where it is duopoly. Only two people are doing that. And A Engineering, the way they have expanded and way they have managed themselves, I think another 10 to 15% upside is possible there. Life insurance stock, after a very long time, we are seeing rally. HDFC Life, SBI Life, and ICICI Pru Life are three stocks in focus. But in ICICI Pru, the rally has been very sharp. It is 19th June 2023. Mr. Anup Bakshi will be the CEO of ICICI Pru. He will have 5-year term. He is a ED in ICICI Bank. So, and ICICI Pru gets very less business from ICICI Bank. So that is something which will change after Anup Bakshi has taken over his market expectation. So that is something which is playing on for ICICI Pru. I expect at least 20 to 25% upside in the stock very soon. SBI card is one more which is in notice. So I think this is one stock which can give very good return. Monsoon likely to hit Kerala in next 36 to 48 hours is what Met Department is saying. So that is also positive. There is a cyclone near Mumbai. So that means rainfall is likely to hit the western coast of India very soon. But even the Met Department is saying rainfall will happen in the mid of June for Mumbai. If the whatever is happening now, the storm will not have a major impact on the monsoon. That is what Met has said. In the news where Musgon Dog was discussed, there are two people who can make submarines for India. One is L&T, which already has a tie-up, but we feel Musgon Dog has a better potential because this is done by the government. Defense Minister has signed the agreement. So the submarine deal is almost 45,000 crore and it can be extended till 60,000 crores, and it is not something it can happen immediately. And if you notice, Musgon Dog already has about 84,000 crores of order book, and added with this, it will have a very big order book. But the deal is likely to be very long-term positive. Now, Germany has done business with us in 1980s or before. Now, and they have built 4 submarines for India, and 2 submarines were built in India at Musgon Dog. So it is not something new. But France was a likely partnership. But at last minute, France backed out and Germany has pitched in. So I think this is going to be very positive. Defense is one sector we remain positive. We like HAL, BEL, BDL, Musgon Dog, Cochin Shipyard, GRSE. Their order books are getting bigger and the execution is also getting better. And we have longer term CEOs for this company, which is again something very positive. Mohit Joshi, last day in Infosys will be June 9, and he will be joining Tech Mahindra very soon. And we need to understand, there was one Infosys notification where Mohit Joshi was getting higher salary than the CEO Shayal. So that means Mohit Joshi is very important person. The vertical he handles now and the revenue which that vertical generates is more than Tech Mahindra's revenue. So I think Mohit Joshi joining Tech Mahindra will be positive for Tech Mahindra. We expect
at least in 1 or 2 quarters, he will lay a roadmap. It is too early to rejoice, but whatever I've observed, Shoppers Shop also, I have seen Venu Nair taking over Shoppers Shop few years before. Now, and it was a loss-making unit. And today he has turned around. During the COVID also, he has done a lot of restructuring. Today, the stock has given more than 5 times return. So I think, Tech Mahindra, Zensar Tech, and even ICICI Pru are few stocks to watch out for. Yeah, management change is something very positive, and as investors we need return. So we need to take calculated risk based on the good management practices. So I thought I will update you on that. Thermax has lost an arbitration case, so that in the exchange notification they have said, so they are directed to pay repair and installation charge both for gas turbo generator at customer plant at Thermax, and the total expenses which will be incurred will be 250 crores with compensation, everything. So this is very negative for Thermax, but any good correction in Thermax would be a good entry opportunity. Nelco is a Tata Group company. They are in defense and other satellite communication. So the company said it will invest in Species network to bolster its portfolio of satellite communication and solution. The Indian market capitalization has hit $3.5 trillion for the first time since December 2022. We need to understand that as we grow, our market capitalization also will grow. We are very positive on the market. Now, more than the large cap, mid cap will be something which will do very good. Tata Power and Princeton Digital Group on Wednesday signed 25 years agreement with Tata Power Renewable Energy Limited to meet the power needs of 48 megawatt Mumbai data center. Cabinet approves Gurugram Metro Extension project for 5,452 crores, and Cabinet also approved a BSNL revival project package worth 89,047 crores, and they have also approved allotment of 4G and 5G network. All Cargo Logistic on Trans India Real Estate to sell Jahar Logistic Park. So the valuation is about 625 crores. The company will get about 400 crores because few stakes is sold outside. And Alcorco is also discussing to sell 10% of another park to Blackstone. So if they sell that 10%, it will be about 60 crores. So Alcorco is trying to come back in business. But we like VRL Logistic, Blue Dart more than other companies. So the business model of VRL Logistic is something good. So I think the margin expansion is possible there. In the last news, Sula Vineyard has signed the 3 new CFO, and it has launched 3 new luxury villas at their iconic Beyond Resort in Nasik. So this is slightly positive, but Sula is very expensive. We don't track the stock at this point of time. With that, over to you, team. थैंक यू सर. गुड मॉर्निंग एवरीवन. अभी हम लोग ये कॉल को एक बार हिंदी में कर लेते हैं. लेमेंटेड जो कंपनी है उन्होंने लाइसेंस एग्रीमेंट साइन किया है 60 रूम प्रॉपर्टी का राजमुंद्री में आंध्र प्रदेश में, और ये होटल जो है एक्सपेक्टेड ऑपरेशनल होगा Q3 फाइनेंशियल ईयर 25 तक. देन नेक्स्ट अपडेट है हीरो मोटो के ऊपर. हीरो मोटो को अभी है उनका गेयर अप कर रहा है एक्सपांड करने का इलेक्ट्रिक 2 व्हीलर रेंज, और वो अपग्रेड करेंगे उसका जो एग्जिस्टिंग स्केल इंफ्रास्ट्रक्चर है और इनहांस करेंगे प्रीमियम प्ले, क्योंकि उनका फ्यूचर ग्रोथ प्लान्स के हिसाब से. और अकॉर्डिंग टू जो न्यू अपॉइंटेड सीईओ है निरंजन गुप्ता, आउटलाइन जो कंपनी का है 3 प्रायोरिटीज मिड टर्म में. उन्होंने बोला है कि वो फोकस करेंगे ब्लॉस्टरिंग उनका जो प्रेजेंस है प्रीमियम सेगमेंट में उसमें वो एक्सपांड करेंगे कंप्यूटर सेगमेंट और अचीव करेंगे लीडरशिप 2 व्हीलर इलेक्ट्रिक सेगमेंट में. देन उनका 2 व्हीलर स्पेस में कंपनी का प्लान है कि वो इंट्रोड्यूस करेंगे न्यू एंट्री लेवल मॉडल्स. देन नेक्स्ट अपडेट है नेल्को. नेल्को जो टाटा ग्रुप की कंपनी है उन्होंने अनाउंस किया कि वो स्ट्रेटेजिक इन्वेस्टमेंट बेस्ड सैटेलाइट नेटवर्क सॉफ्टवेयर प्रोवाइडर है
उन्होंने पिक्सी नेटवर्क्स के साथ ये स्ट्रेटेजिक इन्वेस्टमेंट किया है और ये एक्सचेंज में फाइल हुआ है कि वो ऑफर करेंगे सैटेलाइट कम्युनिकेशन सर्विस एंटरप्राइजेस को, और वो रिवील किया है कंपनी ने कि उसमें वो 9.09 स्टेक्स होगा। टोटल इन्वेस्टमेंट है 99,99,100 और वो अक्वायर करेंगे 1,111 इक्विटी शेयर्स कंपनी के। नालको ने और भी डिस्क्लोज किया कि कंपनी में अक्वायर कर सकते हैं 30% पिक्सी नेटवर्क्स का, और ये बेसिकली सब्जेक्ट रहेगा गेनिंग रेगुलेटरी अप्रूवल के ऊपर। देन नेक्स्ट अपडेट है जो ऑयल मार्केटिंग कंपनीज है एचपीसीएल, बीपीसीएल, आईओसी, वो एक्सपेक्ट करिए कि लोअर रिटेल प्राइसेस पेट्रोल एंड डीजल में होगी। इनके अनदर क्वार्टर में जो फाइनेंशियल परफॉर्मेंस है उसमें रिव्यूज देखा जाएगा। देन नेक्स्ट अपडेट है टाटा एलेक्सी। टाटा एलेक्सी ने पार्टनरशिप की है इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन इसरो के साथ, उनका जो अपकमिंग गंगायान मिशन का जो प्रोजेक्ट है उसके लिए, गगनयान मिशन जो प्रोजेक्ट है उसके लिए। और बेसिकली लीडिंग ग्लोबल इंजीनियरिंग कंपनी है, उन्होंने वो बेसिकली डिजाइन एंड डेवलप करेंगे क्रू मॉडल रिकवरी मॉडल्स। सो ये रिकवरी टीम ट्रेनिंग होगा स्पेस मिशन का, और प्रोजेक्ट मार्क करेगा टाटा एलेक्सी जो उसमें इंटर करेगा मैकेनिक डिजाइन स्पेस में। और ये फर्स्ट टाइम इसरो ने आउटसोर्स किया है मैकेनिकल डिजाइन एंड डेवलपमेंट वर्क के लिए, और उनका जो क्रिटिकल सिस्टम है एक्सटर्नल पार्टनर के साथ। देन नेक्स्ट अपडेट है एथर के ऊपर। एथर जो कंपनी है उन्होंने लेटर ऑफ इंटेंट एग्जीक्यूट किया है यूएस बेस्ड जो लीडिंग ग्लोबल ऑयल फील्ड सर्विस कंपनी है उसके साथ। ये उनको स्ट्रेटेजिक सप्लायर और कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग की पार्टनरशिप है। उसका जो वॉल्यूम और रेवेन्यू पोटेंशियल है न्यू पार्टनरशिप का वो सिग्निफिकेंट होगा एथर के लिए। और ये जो लेटर ऑफ इंटेंट है वो स्पेसिफाइज होगा 4 स्ट्रेटेजिक प्रोडक्ट में न्यू कस्टमर्स के, और ये कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चर जो एथर के लिए होगा वो फर्स्ट सेट ऑफ प्रोडक्ट्स होगा न्यू पार्टनरशिप का। देन नेक्स्ट अपडेट है माजगार्ड के ऊपर। मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस है डिफेंस ऑफ रिपब्लिक जर्मनी है, उन्होंने बोला है कि मिस्टर बोरिस जो है उन्होंने विजिट किया माजगार्ड लिमिटेड को जून 7 को, और ये विजिट के दौरान माजगार्ड लिमिटेड एंड टीकेएमएस उन्होंने साइन किया नॉन बिडिंग एंड नॉन फाइनेंशियल एमओयू कॉर्पोरेशन एंड प्रिपरेशन सबमरीन प्रोजेक्ट P75I, और थाइसन ग्रुप मरीन सिस्टम है और मजगार्ड बिल्डर शिपयार्ड लिमिटेड है, उन्होंने एक्सप्रेस किया इंटेंशन जो बिल्ड करेंगे सबमरीन्स इंडिया के लिए। और ये अकॉर्डिंग टू जो एमओयू है थाइसन ग्रुप मरीन सिस्टम वो कंट्रीब्यूट करेगा इंजीनियरिंग एंड डिजाइन सबमरीन्स एज वेल एज कंसल्टेंसी सपोर्ट, और ये जॉइंट प्रोजेक्ट होगा मजगार्ड शिपयार्ड लिमिटेड के साथ। और मजगार्ड शिपयार्ड लिमिटेड उन्होंने रिस्पॉन्सिबिलिटी ली है कंस्ट्रक्शन और डिलीवर करेंगे रिस्पेक्टिव सबमरीन्स, तो ये पॉजिटिव है। ओवरऑल हम लोग डिफेंस सेक्टर जो है उसमें काफी पॉजिटिव है, तो उसमें एचएल है, बीडीएल है, कोचिन शिपयार्ड है, जीआरएस, ये स्टॉक को आप वॉच आउट कर सकते हो। देन नेक्स्ट अपडेट है गोकुल एक्सपोर्ट के ऊपर। गोकुल एक्सपोर्ट का जो कमर्शियल प्रोडक्शन है वो कमीशन मतलब स्टार्ट हुआ है, और उनको अप्रूवल मिला है रिलेवेंट अथॉरिटी से, और उनका प्रोडक्शन है वो रैंप अप होगा, तो ये पॉजिटिव है। इंडियन टेक्सटाइल हम लोग देखें तो एक आर्टिकल के अनुसार काफी इम्प्रूव हो रही है, तो ये बेनिफिट रहेगा टेक्सटाइल जो कंपनी है उसमें। तो उसमें अरविंद का कौन कॉल हुआ था, उसमें अरविंद कंपनी ने भी मेंशन किया था कि उनका जो सिंथेटिक सेगमेंट है वो काफी अच्छा परफॉर्म कर रहा है, और उनका जो सिंथेटिक सेगमेंट का मार्जिन है उसमें मार्जिन भी हाईयर है। तो ये सेगमेंट में अरविंद है, केपीआर मिल है, गोकुल एक्सपोर्ट है, जो टेक्सटाइल में हम लोग को पसंद है। देन एआई इंजीनियरिंग है, वो डिओपोली बिजनेस है, मतलब ये जो बिजनेस है वो 2 ही कंपनी करती है, और कंपनी ने जिस हिसाब से एक्सपांड किया है तो यहाँ से 10 to 15% की रैली एक्सपेक्टेड है। देन नेक्स्ट अपडेट है लाइफ इंश्योरेंस जो कंपनी है वो काफी अभी अच्छा मोमेंटम में आई है, तो उसमें आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल है, एसबीआई लाइफ है, एचडीएफसी लाइफ है, ये स्टॉक को आप देख सकते हो। आईसीआईसीआई जो प्रूडेंशियल है उसमें वेरी शार्प रैली देख सकते हैं, क्योंकि 19 जून 2023 को अनिल बख्शी जो सीईओ उनके चेंज अपॉइंट होने वाले हैं, और ये जो सीईओ आईसीआईसीआई बैंक से आने वाले हैं, तो ये टेक ओवर के बाद स्टॉक पे अच्छा परफॉर्मेंस देख सकते हैं। देन नेक्स्ट अपडेट एसबीआई कार्ड है। एसबीआई कार्ड भी एक अच्छा खासा रिटर्न दे सकता है, तो वो स्टॉक को भी आप वॉच आउट कर सकते हो। मानसून के ऊपर अपडेट है। आईएमडी है, उन्होंने बोला है कि 36 to 40 आवर में केरला में मानसून हिट करेगा, और मुंबई में मिड ऑफ जून में रेनफॉल हो सकता है।
देन नेक्स्ट अपडेट है मज़ार का ये अभी जो अपडेट दिया उसमें जो सबमरीन के बिजनेस में एल&टी एक फर्स्ट है और सेकंड मज़गाओ डॉक है। तो ओवरऑल हम लोग देखें तो मज़गाओ डॉक में काफ़ी पोटेंशियल है, क्योंकि ये जो ऑर्डर है वो 45,000 करोड़ की है और एक्सटेंडेड हो सकती है 60,000 करोड़ तक। तो ओवरऑल हम लोग देखें तो मज़गाओ डॉक की अभी जो ऑर्डर बुक है वो 84,000 करोड़ की है। और हम लोग देखें तो ये जो डील है वो लॉन्ग टर्म के हिसाब से एकदम अच्छी डील है। देन नेक्स्ट अपडेट है मोहित जोशी है, उनका लास्ट डे था इन्फोसिस में 9 जून को और वो जल्दी टेक महिंद्रा जॉइन करेंगे। तो ये मोहित जोशी को इन्फोसिस ने ऑफर भी किया है, तो ये उससे पता चलता है कि ये सेगमेंट जो संभालते थे वर्टिकल्स, तो उसका जो रेवेन्यू है वो काफी ज्यादा है टेक महिंद्रा से आता था इन्फोसिस को। तो ओवरऑल ये इंपॉर्टेंट पर्सन है। इसके बाद 1-2 क्वार्टर के बाद टेक महिंद्रा में अच्छा खासा मोमेंटम आ सकता है। देन नेक्स्ट अपडेट है शॉपर स्टॉप के ऊपर। शॉपर स्टॉप मतलब शॉपर स्टॉप का जैसे वेन्यू नायर ने चेंज किया था, पहले तो लॉस मेकिंग कंपनी थी, फिर अभी कंपनी ने 5 टाइम्स रिटर्न दिया है, तो उसी हिसाब से हम लोग सोच सकते हैं कि टेक महिंद्रा में भी सीईओ चेंज होने के बाद काफी सारे चेंजेस होंगे। जैसे ही मैनेजमेंट चेंज होता है तो ये कंपनी के लिए पॉजिटिव रहता है। तो आईटी में टेक महिंद्रा, जेंसरटेक और ये स्टॉक वॉच आउट कर सकते हो, उसमें ऐसे प्रोडेंशियल भी है। देन थर्मैक्स है, उनका जो आर्बिट्रेशन केस है वो उन्होंने लॉस हुआ है, मतलब लॉस्ट किया है वो केस, तो उनको जो कंपनसेशन है रीपे करना पड़ेगा जो क्लाइंट है उनको, तो वो कंपनसेशन है 250 करोड़ का, तो ये नेगेटिव है। बट करेक्शन जब भी आता है स्टॉक में तो अपॉर्चुनिटी रहेगी बाइंग की। देन टाटा पावर है, उन्होंने एग्रीमेंट साइन किया है और 48 मेगावाट मुंबई डेटा सेंटर में वो सेटअप करेंगे। देन कैबिनेट ने अप्रूवल किया है बीएसएनएल का रिवाइवल पैकेज के लिए 89,047 करोड़ का। देन जो सूला वाइन यार्ड से उन्होंने साइन किया है 3 लग्जरी विलास और सीईओ भी उनके चेंज होने वाले हैं, तो स्टॉक अभी एक्सपेंसिव है तो हम लोग ट्रैक नहीं करते। देन नेक्स्ट अपडेट है अलकार्गो के ऊपर। जो कंपनी का जो आर्म है ट्रांस इंडिया रियल एस्टेट वो सेल करने वाले जीजार लॉजिस्टिक पार्क को। तो ओवरऑल हम लोग ये सेगमेंट में वीआरएल लॉजिस्टिक के और ब्लू डार्ट के ऊपर पॉजिटिव हैं। Technical and derivatives outlook. With the Nifty, yesterday we saw there was recovery in the market in Nifty index, and Nifty was up by 127 points, closing at 18,726 level. So what we are observing, if we see the Nifty, the all-time high was seen in the December 1st, 2022 at 18,867 levels, which is now only 140 points away from the all-time high level. So we believe that we should be heading to this level. We were always maintained that this month is likely to be a positive bias and decline should be viewed as a buying opportunity. So yesterday there was like telecom, FMCG and metals and oil and gas were the space where we saw the buying, whereas the cement, pharmaceutical and textile were the space where it closed on a neutral note. So net we continue to maintain the positive view today post RBI policy decision. There can be a momentum. We can see further extension of the momentum. The bias is positive. 19,200 should be the view for the end of this month, and immediate support is seen as 18,500. And after 18,500, 18,200 is the next level of support, which we need to keep a watch on. Having said this, in the short term, if 17,800 levels are broken, then we need to change our positive view. So as long as 18,200 levels are held, every decline is a buying opportunity for the long-term upside. Coming to Bank Nifty was up by 110 points, closing at 44,275. So Bank Nifty, it's trading in 1,000 points range of 43,500 and 44,500, and there is a lot of call writing seen at 44,500. So I believe that during the day today, or maybe at the end of the day today, being an weekly expiry, if Bank Nifty crosses 44,400, 44,300 in the first hour of the trade, then there is a probability that even 44,500 levels will be taken out. So post RBI policy, if there is some correction, I think we should use that as a buying opportunity for the intraday long also. So once 44,500 level is taken, there can be a huge short covering in the Bank Nifty. So coming to the derivatives data,
So there was a long build-up in Nifty future in yesterday's session to the tune of 8.33%. The put call ratio has also gained from 1.01 to 1.38%, which is a sign of positive. The major addition in the call front was seen in 18,900 and 18,800. So this is a resistance from the derivatives point of view, and support is in the put option was seen in 18,600 and 18,700. Coming to Bank Nifty continued to see the long build up for the four consecutive trading session. The OI this PCR is also PCR was slightly negative. PCR is just saw a downtick from 0.97 to 0.95, but this is okay. The major additions were seen in the call front was seen as 44,500. So that is the immediate resistance, and the put front 44,000 strike price. So that would be the support. So yesterday we saw that FMCG was a counter where we saw some good buying, specifically UBL, Tata Consumer, and Nestle. These are the counters we have seen a very good buying, and the volumes have picked up. So I believe this stocks will perform in the coming trading session. UBL and Tata Consumer are looking good on charts, so decline should be viewed as a buying opportunity. And lastly, the build up. So what we saw. Stocks like Britannia, Navin Fluoro, UBL, Campaign Homes has seen a long build-up, whereas the stocks like Shriram Finance, Cipla, Ipca Labs, and M&M Finance is a short build-ups. And lastly, the stocks which are in ban are India Bull Housing Finance, India Cement, and Manappuram. So that's from my end. I'll hand over to Bhavesh sir for more research updates. Thank you. So there is an update on Aether Industries. So Aether Industries has executed letter of intent with USA-based leading global oil fields company for strategic supplier and contract manufacturing partnership. So this is the revenue and volume potential could be significant for Aether, so it is positive. Secondly, on Mazgaon dock. So from Ministry of Defense in Germany, Mr. Boris had visited the company in June. And during his visit, he has signed a non-binding, non-financial MOU for cooperation and preparation of submarine project. So ThyssenKrupp Marine System and Mazgaon Dock, these two companies have expressed intention to build submarines in India. So this is again very positive. So both these companies, positive, Aether and Mazgaon Dock. So that's it from me. Over to you, retail team. Thank you, sir. Thank you, sir. And good morning, everyone. We'll see more with more further updates starting with Tata Elxsi. Tata Elxsi has partnered with ISRO for the upcoming Gaganyaan mission. This global leading engineering company has developed a crew model recovery models for the recovery team training on the space missions. The project marks the Tata Elxsi's foray into mechanical design for space, as this is the first time ISRO has outsourced mechanical design and development work for the critical system to an external partner. HPCL, BPCL, IOC, they had said that the lower retail prices of petrol, diesel can be expected if there is another quarter of robust financial performance. The officials said that the major largely recoveries are done and high under recoveries witnessed over the past year due to high crude oil prices and stagnant retail fuel prices. The petrol and diesel prices majorly remained stable in the May last year, and they had declined post the center announced the excise and duty. Nelco, the Tata Group subsidiary, announced that it has made a strategic investment in Mumbai-based satellite network provider Fixed Network, and they had picked a 9% stake in the Fixes. Total investment would be 99 lakhs rupees, and they have brought 1,000 shares in that. Nelco further disclosed that there is a company may acquire 30% more stake in the subject of gaining the regulatory approval. Hero MotoCorp is gearing up for expanding its electric two-wheeler range while upgrading its existing infrastructure and enhance the premium play at its future growth plan, according to its CEO Niranjan Gupta.
Last update from mine would be Lemon Tree Hotel has said it has signed a license agreement for 60-room property in Rajmundry, Andhra Pradesh, and hotel is expected by Q3 FY23.